Press the bell icon to never miss a video from Popexo Daily. शुरू किया था चोपड़ा से. Apparently Zara is to be pronounced as Sarah. I read it somewhere. उसके मालिक को पता ही ये बात. The journey from Chopra to Chopar. Look in the camera, smile, and go. ओहो लाइट गई. गई. लाइट को बोला था क्या go? Hi guys. Hi guys and welcome back to another episode of Popexo Game On, and in today's episode we are here together to take the ultimate fashion challenge. इस challenge में 3 stages हैं. Right. So the first round we'll be given 2 almost identical logos and we have to guess the correct one. And in the second round we'll have to guess the name of the brand by just looking at the logo. Third one. We'll have to correctly pronounce the name of these brands. And we'll be given only 15 seconds to guess it all. तो challenge काफी interesting है and fashion के बारे में हमारी knowledge बिल्कुल zero है. But without any further delay, it's time for Game on. What's your go-to clothing brand? यार honestly I prefer to shop offline and I don't think so I have a clothing brand, I have a clothing store. Like I love going to lifestyle. Sarojini. सरोजनी में जितने ब्रांड मिलते हैं सब ज़ारा, फॉरएवर, वहाँ तो वो ब्रांड भी मिलता है जो तुम्हारे मॉलों में भी नहीं मिलता, पता है तुम्हें? ऐसे कौन से ब्रांड है? हाँ बहुत सारे ब्रांड्स जो अभी आए नहीं है इंडिया में. जैसे जब कौन सा नहीं आया था मैं बताती हूँ. 2-3 ब्रांड्स हैं H&M when H&M was not in India, हाँ, you वो used to मिलता find था. it. I am तो काफी गरीब. I don't have a half of salary, so I wait for Amazon and Flipkart's big billion days and so that गरीब डिस्काउंट में मिले. कोई डिमांड्स नहीं है. जहाँ सस्ते मिले मैं खरीद लेता हूँ. Or like I go online and do most of my shopping because time किसके पास है guys? I think for the longest time that I remember मैं तो जनपद और सरोजनी जा रही हूँ. One expensive item that you've invested in. I think the last most expensive item I bought was a blazer from Zara, and actually I was out on a date and then this girl was like no I have to go to Zara and she picked up so many things. I was like शर्म के मारे कुछ तो उठाना पड़ेगा वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है. Obviously recently तो मैंने कुछ ऐसा कुछ expensive खरीदा नहीं है, but if I would invest I would only buy expensive shoes or I would buy expensive bags because only those are the 2 things that will last. Otherwise तो सबका size बदलते रहता है तो वो 6-7 महीने से ज़्यादा मैं पहन नहीं पाऊंगी. तो jeans so I can never. I don't understand when people buy expensive Gucci t-shirts. Like I don't get it. मजाक है. मम्मी ने बाद में पोछा बनाना है तो गुची से सब्जियां साफ होती कैसी लगेंगी ना तो मुझे समझ नहीं आई. So no. Have you ever bought a fake designer merchandise? Oh, this is for me. This is for me. Please happily take it on. ब्रांड्स का बहुत शौक है इस गरीब को. So I go to सरोजनी, I go to लाजपत. अगर कहीं को मुझे अगर टैग्स अलग सा मिल जाए ना तो मैं वो भी लगा दूंगा. Hell no. Excuse me, सरोजनी से कौन चर्चा लेकर आया तो तो? H&M डिजाइनर थोड़ी है वो तो. अच्छा डिजाइनर एज लाइक सस्ता लाइक brand. अच्छा मतलब लाइक Like गुची a एंड ऑल. fake Louis Vuitton. नहीं यार. Like okay. Too tacky. Okay, it is not fake. But it's like how you know First copy. no not first copy, how sometimes Aldo copies Gucci ka design. Oh, yeah. That I have done. So let's start with the first stage of the challenge. Guess the correct logo of the fashion brand. और पहला वाला है Levi's. So what do you think, A or B? नीचे करो ऊपर वाला. ऊपर वाला है. हाँ A. ऊपर वाला है. B. It's B. What? It was A. I knew that shit. एक चीज आती थी मुझे. Okay, next. Second brand is Rolex and Second वाला. second वाला, हाँ, B, second B, वाला. B. हाँ. हाँ. वाह कभी हमने चाहे खरीदी ना हो रोलेक्स बट वी नो. it's B. 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 Oh yes. Finally हमारा खाता खुला. टॉमी. Yeah. I think A है क्या? ओह ये तो बिल्कुल ही सेम है. Tommy Hilfiger. Okay, let's. ये क्या है? ये तो वही चंगू ये ऐसे करती और ऐसे करती है बोले ये क्या बकवास है? नहीं बिल्कुल सेम नहीं है उल्टा. हाँ मतलब उल्टा है बस बाकी सब सेम I है. think first. वो कलर का भी है शायद. थोड़ा नीचे करो. सेम है. सेम है बस उसको उल्टा कर दिया. I think so it's the second one. Okay, second one. It's इसमें B. फूटेगा? B. तो हमने फर्स्ट बोल दिया था पर गलत है. नहीं बट A था यार. ओहो. आता है. Brand, yes. पर इसमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है. नीचे करो. हाँ? अरे यार बिल्कुल ही सेम है. इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है और ये एक शीट पे भी नहीं है. एक सेकंड. ये क्या है? ये तो ऊपर तो काफी हट्टा कट्टा कुकड़ाइल है. नीचे पद. रुक जा यार. Bro, there is no difference. Absolutely. नहीं है
क्या है? ये see this extra line of triangles are there. I think A is the right one. ब्रो क्या बात कर रहे हो? सेम तो है, 3 लाइनें नहीं, हैं. ये देख यहाँ पे है 5 है triangles, यहाँ पे उसके नीचे और 3 है. शगुन का बी. गलती से मैंने 2 गेस किया था. दोनों सही थे यार, मेरे गलत हो गए. Oh यार. Girl. So guys, with that we've come to the stage 2 of this challenge, जिसमें हमें logos दिखाए जाएंगे and we have to guess the name of the brand by looking at those logos. Hollister. Oh yes. Oh, you're right. जब हॉलिस्टर भी नहीं मिलता था ना इंडिया में, पर हमें मिलते थे पजामे हॉलिस्टर के सरोजनी में. मैंने उन्हें खरीदे. मैंने बहुत खरीदे हैं. I have absolutely no clue. It's something called brand? Falcon. Falcon is the name of a fashion brand. मैंने I don't know, मुझे लग रहा है पता नहीं. Yes, girl. They have the best pajame. Moving on next. to logo number 2. Yeah. Converse. ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है. मतलब मुझे कॉन्वर्स पता है, बट मुझे ऐसे देख के एकदम से क्लिक नहीं हो रहा कि ये नहीं कॉन्वर्स है. यार क्योंकि ऐसा और किसी का नहीं है यार. नहीं, वो मुझे जूते भी पता नहीं लगा है, होता. बट हाँ, लेकिन मतलब मेरे को तो मैं तो ये हार जाती भैया, तुम नहीं होती तो. बट गुड, वेरी गुड. Oh, this I know. Shoe brand. This I know. है ना? Yeah. This is Converse. Yeah, Converse. Okay. नेक्स्ट. Next. यार ये पता है. If there was an L to this, I would. यार ये पता है. It's Saint Vogue. Victoria's Secret, guys. Come on. Like, are you kidding me? Wow, yes, I did not like. I know all these brands, but I can't guess. Saint Victoria's Secret है. something. No. Victoria's Secret है. Should we go to the next one? ये क्या कीड़े मकोड़े? This I don't know. I'm getting the sense that this is like Givenchy. I think I don't know. I just बोल ना. I think it's Givenchy. Okay. Right? Oh, this is. Graphic designing. अरे यार, this is. No, this is not Tory Burch. टॉरी बोश है, ये टॉरी बोश है, ये टॉरी बोश है. नहीं यार. हाँ Tory हाँ Burch भाई. नहीं है. नहीं है. नहीं है. So basically, we've been able to correctly guess the logo, but the pronunciation was wrong. We've been told it's called Givenchy. ऐसे करके वो एक गेम आती थी, वो ऐसे उसके अंदर स्क्रू होता था, वो हमें एंड तक पहुंचाना होता था यूएसएस करके. ये वो वाली गेम है. Sounds काफी pretentious, but because we've got the point, so we no longer care. सरोजनी में अभी जीवांश पहुंचा नहीं है. तो हमें पता We नहीं never है. buy. That's why, you know. And we've come to the last and final round, the round that we've been dreading all along, which is all about pronunciation. Yes. So which is very tricky for me. Oh, ये मुझे पता है. या सेंट लॉरेंस. ऐसे नहीं बोलते इसको. अब बताओ. It's Yes Chez Laurent. क्या क्या? Yeah. Yes Saint Laurent. I think that's the correct pronunciation. It can't be Laurent. It's Laurent. Yves Saint Laurent. Yes, but if you can't say that, say West Saint Laurent, Saint Laurent, Laurent, anything. Your choice. Say YSL. अगर कुछ ना हो जाए, इज्जत बचानी है. Say YSL को वो actually सही है. तो say YSL. Laurent was right. We should get half a point for Laurent. Okay, so the next one is Jean-Paul Gaultier. Oh my God, Jean Paul. कौन है ये Jean Paul? अरे जीन पॉल गॉल्टियर. Jean Paul Gaultier. हाँ ये जो भी इसमें बोला. So Jean Paul Gaultier. तुम लोगों को इंग्लिश ऐसे पढ़ना सिखाया गाइस. Just read it as straight. ये फ्रेंच में किसी ने मैं बताया था ये बात. Please give me some bonus mark. वाओ यार, हम जीत रहे हैं ये 100%. ये मैं मान ही नहीं सकती. टीजो और शांतनु को इस जन्म में पता हो ये क्या है. हैं ये कभी गए नहीं घाटों पर. ये फ्रेंच बताएंगे हमें. हाँ, नेक्स्ट. I Yeah, can't. this I'll pronounce very badly. I'll do. Okay. Emilio Pucci. Emilio Pucci. कर ले भाई. Emilio Pucci. Pucci. Emilio Pucci. Emilio Pucci. ए आयो. इधर पप्पी छप्पी पुच्ची पुच्ची कुच्ची इमुलियो पुच्ची. यार, It's I'm Gucky. not great. Emilio Pacchi. पक्की? Because it's G is Gucky, right? नेक्स्ट वन इज टोपार्ड. चोपाट. चोपा. Chopard. एक सेकंड. अच्छा बोल, उसके बाद बोलता हूँ मैं. हाँ. Chopard. Chopard. चोपार्ड. Please यार, we're anyway going to lose यार. Yeah. एक point यार. मतलब ये क्या है? एक point. So my final answer is Chopard. Okay.
हम चोपड़ा से लेकर Yeah, यहाँ look at the journey that we've taken. Yeah, it's very. Okay, so the next one is Comme des Garçons. ये तो बोल दे आखिरी वाला भी. मेरा तो मुंह ही भंग हो गया है. तो ये ना सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है. मैं इतनी कबार हूँ नहीं, ठीक है. I know all एमिली French. पुच्ची पहनती है हमारी बहन, मजाक नहीं. I know all French. I know Spanish. It's Como des Garçons. This I know is not wrong. It's Como des Garçons. So guys, we clearly won, all thanks to Shreya. But in the end of the video, I would like to say one thing to you all, that I know I was exaggerating a little bit too much on the accents and on the pronunciations. I probably did know a few, but I was just being a sport, and this was all in fun and games. But all I want to say is that you need to be proud of what you are and what you know, and you don't need to be ashamed of anything. And this is for people who bully other people when they don't pronounce something right. You need to know that this is not our first language. We were never taught French, so for us to not know the correct pronunciation is okay, because we never make fun of foreigners when they don't say our names right, or even some of the Indian brands or anything Indian, they don't say it right, but we never make fun of it. We call it accent. So we don't have to bully our own people for doing the same, right? Yeah, I mean, whether it's a foreign language, whether it's even if it's Indian language that you have never heard of. Yeah. As a North Indian, I might not know a lot of South Indian languages and I might not be able to pronounce them right. But give that person a chance if they want to learn, help them out. Don't make fun of them, because that is definitely gonna shatter their confidence in the long run and be detrimental for them to learn ahead. Yeah. बाकी तो ठीक है यार. सरोजनी जिंदाबाद. सरोजनी सही तो बोलना आता है तो सब सही है. So guys, I hope you enjoyed this video as much as we did, and let us know how many you got right in the comment section below. And because you love PopXO and our content so much, we got a surprise for you. What if I told you you could get your hands on some amazing beauty products, and all you have to do is just sign up for the MyGlamXO Insider program and get ₹150 off when you shop from myglam.com or the MyGlam app. The link is in the description box below. And for more such videos, like, share and subscribe to PopXO Daily.